Hello friends, welcome to ProTalent and this is our legal reasoning score booster module number 1. In this score booster module, as we discussed earlier, that we are going to talk about some important concepts. ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूं concepts on contract. Contract के ऊपर I will be in a position to cover some around 3 to 4 modules, and in this 3 to 4 modules I will pick up some important concepts. Remember, in this particular module, this is an advanced level module, so I may not be in a position to go through a lot of small details. Okay, जो एक concept develop करने के लिए basic के लिए जरूरी है, but I will be directly jumping on the advanced level thing. Okay, जब मैं ये advanced level का चीज आपके साथ discussion करूंगा, इसके साथ I will be giving you PDF for practice question. ये मॉड्यूल के साथ I will be giving you 50 questions. 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसको सॉल्व करना है, उसके साथ उसके आंसर कीज होंगे जो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, एंड देन आई विल बी टेकिंग वन मोर मॉड्यूल ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा. ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली द प्लान फॉर दिस लीगल रीजनिंग. Score booster sessions are turning out to be one of the very unique one. We are going to give you one of the superb support for this particular program. So legal reasoning advanced module number 1 concept on contract. So उसको समझने के पहले ये पता होना चाहिए that contract में किस किस तरीके के questions बनते हैं. So contract के अंदर जो questions बनते हैं, that first is formation of contract. Okay, क्या क्या होता है formation of contract के अंदर? You have an offer, then there is an acceptance, okay, and then there is a consideration. Okay, so this is basically the kind of contract getting formed. Question वहां पे आता है कि भाई ऑफर में कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो गया, एक्सेप्टेंस में कुछ आगे पीछे हो गया, कंसिडरेशन लॉफुल हुई कि नहीं हुई, इस पर्टिकुलर चीज को कंसिडरेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस तरीके के one type of questions are available. I believe that many students are very comfortable with this particular idea. The problem with most of the students would be about communication of an acceptance. Okay, this is a big problem we need to worry on. Okay, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे आज. कंसिडरेशन में किस चीज को हम वैलिड कंसिडरेशन बोलेंगे, ठीक है, वो ज्यादातर लोगों को पता होता है. But there are certain you can say consideration which is like restraint of marriage. ठीक है, उधर कुछ जगह पे दिक्कत है लोगों को. So I thought to cover that particular issue as well. So I will be covering that particular part as well. In addition to this, you can say offer and acceptance. There are certain you can say other questions available like contingent contract, wager, and quasi contract. Okay, so these are the some of the contract where people get into trouble about. ठीक है, I will be covering this contingent today. ठीक है, wager और contingent दोनों का एक मैंने अलग से वीडियो लिया था जिसके अंदर I develop a concept, but here I will be covering this contingent contract. Then the third part, which is types of contract. Okay, types of contract, which is where lot of problem comes. Like okay, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आता है बिलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आ गया. ओके, ठीक है, या एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट आ गया. ठीक है, या पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट आ गया. ठीक है, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, या प्लेज करने का कॉन्ट्रैक्ट आ गया. ओके, या पॉसिबली अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिलेटेड टू सॉर्ट ऑफ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट आ गया. ओके, ठीक है, सो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, out of which I will be covering this indemnity in this particular module, and in the rest of the other module I will be covering all this. Okay, ठीक है, मैं ये सब चीजें आपके साथ कवर करूंगा. ये तो हुआ टॉपिक के बारे में. ओके, व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज आपको ये सब पता हो, और ये पता होने के बाद
you should be in a position to solve a practice question. So I will be in a position to give you 50 questions on only contract, okay, in this particular module. जब आप उसको solve करेंगे, that will give you a good support for your own preparation, okay. So this is what I will be going and discussing with you. So let me start to talk about first and foremost communication. और सबसे बड़ी परेशानी communication में रहती है, that is postal rule, okay. So what is the rule? The rule says the communication of acceptance is complete as against the proposer. मतलब proposer के सामने, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम अ प्रपोजर और यू आर एक्सेप्टर, ओके. आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट मेरे खिलाफ तब मानी जाएगी जब व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. मतलब आपने कोई सामान कुरियर से निकाल दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक्सेप्टेंस मेरे तरफ हो गया. सो इफ आई हैपन टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे ये पता चला कि आपने निकाल दिया है कुरियर, तो भैया वो आपका एक्सेप्टेंस है, वो मेरे खिलाफ ऐसा माना जाएगा. एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, ओके. सो आपके लिए वो एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? जब मुझे पता चल जाए, ठीक है, दैट आई रिसीव्ड योर कम्युनिकेशन, तो आप भी मेरे साथ बाइंडिंग हो जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल बी एक्सेप्ट्स ए's proposal by letter sent by the post. Communication of acceptance is complete as against A. That means A is a proposer. उसके खिलाफ acceptance तब गिना जाएगा when the letter is posted. B ने जिस दिन लेटर पोस्ट कर दिया उस दिन A का बाइंडिंग एग्रीमेंट चालू हो गया. And as against B when the letter is received by A. I think this is very easy. Yes or no? So ये बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है. ये गलती नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर ईमेल के द्वारा भी कम्युनिकेशन हुआ, ईमेल के कम्युनिकेशन में भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर लेट्स से A is a proposer and B that is you are acceptor, और आपने ईमेल के द्वारा मुझे कोई चीज भेज दी, आपने भेज दी, तो मेरे खिलाफ, ठीक है, अगर मैं बात करूं मिस्टर ए, मैं, ठीक है, तो मेरे सामने वो एक्सेप्टेंस हो गया क्योंकि आपकी तरफ से वो कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर तारीख को निकल चुका था, ठीक है. और आपको बाइंडिंग कब होगा? जिस दिन वो ईमेल मुझे मिले तब आपके ऊपर वो बाइंडिंग होगा. दिस इज कॉल्ड पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन. लॉजिक बहुत सिंपल सा है. लॉजिक इतना सिंपल है कि भैया जो बंदा कम्युनिकेशन भेज रहा है, ठीक है, वो जब अपने हाथ से कम्युनिकेशन निकाल दे, अब उसको उसमें मॉडिफाई करने का कोई पावर रहा नहीं, ठीक है, तो भैया उसको एक्सेप्टेंस का एक कम्युनिकेशन माना जाएगा. पर तभी माना जाएगा कि जब सामने वाले के पास कब पहुंचा और कब उसको गिना जाएगा. सो ये रूल याद रखेगा. अब देखते हैं इसके ऊपर से एक मजेदार सा क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑफर और एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन के नजरिए से ले लेता हूं ताकि कहानी थोड़ी इजी बन जाए. An agreement without consideration is not valid. Okay, Bhim and Seema are wife and husband. Okay, both are employees. Seema promised to pay a sum of rupees 2000. So Seema is a husband here. Okay, and she promised to pay 2000 rupees every month to Bhim. But after 2 months, Seema stopped sending the promised amount to Bhim. Bhim sues Seema for that. Now, is this a kind of, you can say, agreement? यहाँ पे बोला agreement without consideration is void. So was there any consideration for, you can say, any party here? Seema is sending money, Bhim is getting it, both are employees. So यहाँ पे कोई तरीके का consideration दोनों पार्टी से flow नहीं हो रहा है. It is mere promise. It is mere promise, and therefore Bhim cannot sue Seema in this scenario. So answer has to be no. Bhim cannot sue Seema because it is mere promise. Coming to next question, it says that to form a contract there must be offer and acceptance and consideration. हमने बात करी थी to form a contract ये तीन चीजें चाहिए. क्या क्या चाहिए? You need offer.
then there is an acceptance, and then there is a consideration. यहाँ पे बोला गया है X offers to sell his bike at rupees 25,000 and posted a letter to his friend Y. उसको 25,000 की अपनी बाइक बेचनी थी and he sent a letter to Mr. Y. At the same time, without knowing the offer of X, Y sent a letter to X to purchase the said bike for rupees 25,000 rupees. उसमें भी Y ने भी भेजा कि मुझे तुम्हारी बाइक 25,000 में ही खरीदनी है. But X and Y did not receive each other's letters. किसी को भी एक दूसरे के लेटर मिले नहीं है. जब इनको एक दूसरे के लेटर मिले नहीं है, ठीक है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो हुआ उसका कोई कम्युनिकेशन तो कुछ हुआ नहीं. Yes or no? Yes or no? So there was no communication. So when there is no communication, how can we say it's an offer? ठीक है, ऑफर होने के लिए कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना भैया. सो देयर इज नो कम्युनिकेशन. व्हेन देयर इज नो कम्युनिकेशन, देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो consideration. So therefore, is there a contract between X and Y? Therefore, there is no contract. Answer has to be no. Okay, so no is the answer. C बोलता है instead of letters they could have contacted through phone, which is basically ऐसे ज्ञान मारने वाला आंसर तो होगा नहीं. प्रिंसिपल के मुताबिक होना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आता है दैट दिस इज नो कॉन्ट्रैक्ट. अब चालू होता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन के रिलेटेड मजेदार सा क्वेश्चन. मेकिंग द एक्सेप्टेंस विद इन अ डेट इज सफिशिएंट. इट्स रीचिंग द पार्टी विद इन द टाइम फ्रेम इज नॉट नेसेसरी. ये प्रिंसिपल यहीं पे लागू हो रहा है. अब इस प्रिंसिपल को आप हमेशा इन जनरल अप्लाई मत करिएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये गलती हो जाती है that they remember that this principle was there and next time they apply the same principle to some other situation even without the given principle. So I think that's a bad idea. You should never do that. Okay, so here principle बोलता है making acceptance within the date is sufficient. It's reaching to the party within the time frame is really not necessary. Okay, चलिए देखते हैं. A is an insured person's wife sent the premium by money order on the last date of the premium of the life insurance. After 2 days, the insured person died even before the money order reached the insurance company. Money order did not reach to the insurance company, but before that this person died. Okay, the insurance company did not pay insurance claim to the husband of A. It contended that insurance policy could not be revived as it received MO, that is money order, after the due date. Is insurance company liable to pay the insurance claim? Here, insurance company is definitely liable. Why it is liable? Because as per principle, making acceptance within the date is sufficient. So here, the acceptance was made was within the given date. On the last date, उस बंदे ने acceptance किया. उसका acceptance क्या है? Money order. Money order is a money to be paid. It is a money to be paid to the post office. तो उस बंदे के जेब से तो पैसे चले गए. अब वो सीधा पोस्ट ऑफिस वाले के पास पड़े. पोस्ट ऑफिस वाला जब उसको डिलीवर करेगा तब डिलीवर करेगा. पर मिस्टर ए की तरफ से तो कहानी प्रॉपर बैठ गई है. Yes or no? So therefore, is insurance company liable to pay the insurance claim? Answer has to be yes. So that is the yes. The insurance company is liable to pay. Coming to next principle. If a contract is made by post between two persons living in two different cities, then the contract is said to be complete as soon as the letter of acceptance is properly posted, and the place of completion of the contract is that where the city of acceptance where it is posted. Okay, so for example, let's say Mr. A and Mr. B, I stay in Surat and you stay in Lucknow. Okay, and you are sending some acceptance from Lucknow. That means it is completed at Lucknow. Okay, because you accepted that in the Lucknow. It is worth mentioning here that in every contract there is always an offer from one party and acceptance of the offer from the other party. So which is very obvious for every one of us to understand. Fact देखते हैं. Sunny, a resident of Patna,
gives an offer by post to sell his house for rupees 25 lakh to Hani, a resident of Allahabad. This offer letter is posted on 1st January 2013 from Patna and reaches Allahabad on 7th January 2013. Hani accepts this offer and posts the letter of acceptance on 8th January 2013 from Allahabad, which reaches Patna on 16th January 2013. But Sunny, presuming that Hani is not interested in accepting his offer, sells his house to Gani at the same price on 15th January 2013. If Hani files suit against, you can say, Sunny for breach of contract in the competent court of Allahabad. Will Hani succeed? Now, Hani will definitely get succeed. Why Hani will succeed? Because on the date of, you can say, on the date of, you can say, sending this post, it is binding on the another party that is called Sunny. Okay, Sunny को वो binding होगा on the 8th तारीख, and that is at the place called Allahabad. So Hani cannot be sued, galat baat. Hani cannot be sued, galat baat. Hani can be sued. Hani can succeed as he properly posted the letter of acceptance and the delay was beyond his control, or Hani can succeed as the contract become complete in the eyes of law on the date of posting of the letter of the acceptance. So that means answer has to be D. D क्यों होगा? Because D talks about the principle. Okay, well C is also right, but that is a reason for it. That is a reason for it, but it is no legal element involved. ध्यान रखिएगा, C के अंदर कोई लीगल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है. लीगल एलिमेंट के पीछे का कारण इन्वॉल्व है. ठीक है, लीगल एलिमेंट क्या है? लीगल एलिमेंट बोलता है इन द आइज ऑफ लॉ, जिस दिन आप लेटर पोस्ट करते हो उस दिन एक्सेप्टेंस माना जाएगा, तो वो लीगल एलिमेंट है और वो एलिमेंट हमने यहाँ पे बोल दिया. सो दैट इज द बेटर आंसर कंपेयर टू सी, क्योंकि सी में लीगल एलिमेंट नहीं है. आई होप दैट इज वेरी क्लियर. ओके, coming to number, you can say next question, saying that principle 1, acceptance and offer. Acceptance of an offer is complete when the acceptance is put into the course of transmission so as to be out of power of acceptor. ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं. क्या मतलब है उसका? भाई एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा अगर आपने लेटर निकाल दिया, आपके पावर में से वो चीज निकल गई. सो दैट इज बेसिकली एक्सेप्टेंस. एंड नंबर 2, एक्सेप्टेंस वंस कंप्लीटेड मेक्स एग्रीमेंट binding on both the parties. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, when acceptance is completed, it is binding on both parties. Here, A accepts to buy B's offer of his motor car for rupees 4 lakhs. ठीक है, the acceptance was into email. Unfortunately, when the email was put, there are distortions, as a result of which B is not in a position to really read what A has written. Okay, so here is this an agreement or not? Okay, so agreement कब है? When acceptance is put, ध्यान से देखिएगा, acceptance is put into the course of transmission. भले सामने वाले को वो पढ़ने में नहीं आया, that's a different matter. What is very important? The important part is आपने उस communication को आपके हाथ से निकाल दिया. Now you cannot change, and therefore is B bound by this? Yes, B is bound by this particular agreement. So B is bound to perform the agreement. Whether A is bound by this particular thing? No. आपने याद किया हो, पोस्टल रूल के मुताबिक हमने सीखा था कि A को बाइंडिंग तभी होगा जब B को वो चीज कम्युनिकेशन पहुंच जाए. B को बाइंडिंग है, A को नहीं है. अगर A बोले कि बाइंडिंग है तो अब खत्म हो गया, दोनों को बाइंडिंग हो जाएगा. पर अगर ये B कुछ बोले और A पहले बोल दे कि भाई आई डोंट एग्री विथ दिस, तो B अभी भी, A अभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकल सकता था. ओके, चलिए, ग्रेट. सो दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी फ्यू मोर टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इट सेज रूल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. It is very important for you to understand this. Rule of privacy of contract. So it is a contract between two parties. Okay.
third party is not a party, so can't claim any damages or cannot enforce his rights. Okay, there was a very famous case in English law called Twiddle versus Atkinson. Okay, so in this case there were two parties, A and B. ठीक है, A said to B that if you marry someone, I will give you so much of money to this person. ओके ठीक है, लेट अस से C. ओके, अब मानो और डी बोलता है कि बी ने कंसर्न पर्सन से शादी कर ली तो ए को ये पैसे देना चाहिए. ठीक है, डी इस पिक्चर में नहीं आ सकता. इट इज बी हु कैन से सो बट नॉट डी. सो थर्ड पार्टी कैन नॉट बी अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. So this is a very famous case called Twiddle versus Atkinson. This is called rule of privity of a contract. So the explanation says, that no stranger to the consideration can take advantage of the contract, although contract was made for the benefit of the stranger. ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, stranger के benefit के लिए contract हो सकता है, but he cannot enforce that particular contract. Then comes agreement in restraint of marriage will be void. ठीक है, कोई भी agreement in the restraint of marriage is void, but remember that restraint of marriage must be full and absolute. अगर वो full और absolute नहीं होगा, ठीक है, if parties are having choice, then restraint shall be partial and it is not absolute, and if it is not absolute, then it is not void. Okay, so example देखते हैं absolute का. A and B enter into agreement whereby they agree not to marry anyone throughout their life. This is called absolute constraint and this is called void. Okay, this is void. While partial one says A, father of B, agrees with B that if B marries anyone, A will oust him from the share of the property. ओके, तो वो अपनी प्रॉपर्टी में से उसको दखल अंदाज कर देगा, उसको दूर कर देगा. ठीक है, पर यहाँ पे क्या चॉइस है, बी को अगर प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, बी को अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो शादी नहीं करेगा, अगर बी को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो वो शादी कर लेगा. सिंपल सा गणित है. यस और नो. सो देयर इज अ चॉइस. व्हेन देयर इज अ चॉइस, restraint is termed as partial and therefore it is not void. While here in this scenario it is absolute and therefore it is void. Okay, let's see one more example. Every agreement in the restraint of marriage of any person other than a minor is a void. Okay, Kader Khan died on a road accident. Two co-widows, Rukhsana and Marjana, enter into an agreement that if any of them will remarry, would forfeit her right to her share in the deceased husband's property. अगर दोनों में से भी किसी ने भी किसी और के साथ शादी करी तो वो अपने जो डिसीज्ड पति है उसकी प्रॉपर्टी में कोई हकदार नहीं होंगे. So is this a restraint of marriage? So this is not a restraint of marriage because it is not absolute, it is partial. Okay, so agreement is void. No, agreement is not void चल सकता because no restraint was imposed upon either of the two widows for the remarriage. हो सकता है, ठीक है, restraint was partial, so agreement is valid and none of the above. ठीक है, so होना क्या चाहिए, restraint was partial and so the agreement was valid. Answer would be C. यहाँ पे बोला no restraint was imposed. Here small restraint was there and therefore better answer would be C. Okay, chaliye, great. So this is basically the restraint of marriage. Now I will discuss about few types of contract. So I am sure you are aware about this contract. We already discussed and you must be knowing it. Contingent contract बोला जाता है. क्या है ये? Conditional contract है. A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. This is called, you can say, types of contract and they are called contingent contract and these are the essential things of this particular contract. Number one, there must be a valid contract. सबसे पहले valid contract होना चाहिए. ठीक है, गलत चीजों का contract तो आगे बढ़ेगा ही नहीं.
number one. Number two, the performance of contract must be conditional or dependent on the future event. Okay, so this is basically called conditional. Number three, there must be uncertain future event. Event कैसी होनी चाहिए? Uncertain, and it should be of future, and the event must be collateral to the contract. अगर event contract का collateral का part नहीं है, which means it is not an regular part of that contract, तो भैया वो contingent नहीं माना जाएगा, वो wager होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आज विराट कोहली 6 मारता है, 6 बार 6 मारता है, आई विल गिव यू 100 रुपीज. सो आपके और मेरे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें विराट कोहली के 6 बार 6 मारना इज नॉट अ कोलेट्रल. ओके, इट इज नॉट अ कोलेट्रल एंड देयरफॉर दैट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट is void. Okay, so कोई भी impossible event है उसके ऊपर अगर contract किया गया which is contingent contract, it is not valid. For example, A contracts to pay rupees 10,000 if B's house is burned. This is a contingent contract. A promises to be rupees 1 crore if certain ship does not return within a year. That is also contingent contract. These are the example of contingent contract. Let's see one example. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. ये महत्वपूर्ण है. A agrees to B to pay some money of rupees 1 lakh if B marries C within a period of 6 months. B marries C during 7 months as the marriage hall was available only during that month. B claims 1 lakh from A. Okay, तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि 6 महीने का जो टाइम दिया गया था उसी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. एनीथिंग बियॉन्ड दैट 6 months will not be valid. Okay, so therefore B cannot claim. Okay, so B cannot claim rupees 1 lakh from A as B married C after the duration set in the contract. ठीक है, so time is of an essence in the contract. ये तो बिल्कुल आपको पता होगा. Then comes the contract of indemnity. Indemnity का मतलब होता है protecting from the loss. Definition बोलती है it is a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. ठीक है, या तो जो प्रोमिसर है उसी की वजह से अगर आपको नुकसान हुआ तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, या किसी और की वजह से भी आपको अगर नुकसान हुआ तो प्रोटेक्ट करेगा. इंडेमनिटी इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट कंपेंसेशन फॉर द लॉस. ओके, रिमेंबर ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, इट इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है, ओनली इट इज नॉट यू कैन से काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एनी अदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है वो आपको बोलती है कि अगर आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ आई विल पे यू. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट. ओके, हियर लायबिलिटी लाइज विद द प्रोमिसर एंड इट्स अ प्राइमरी लायबिलिटी. जो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको बचाऊंगा तो उसकी लायबिलिटी प्राइमरी है, सेकेंडरी लायबिलिटी कोई नहीं है, सामने वाले को कुछ करना नहीं है. एंड रिमेंबर इट हैज टू बी वेरी एक्सप्रेस एंड स्पेसिफिक. लिखी हुई होनी चाहिए. इंडेमनिटी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओरली या इंप्लाइड वे में नहीं होता है. एंड प्रोमिसी मस्ट हैव सफर्ड द लॉस. दिस इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ओके, सो ये ध्यान रखना जरूरी है. एंड देन कम्स द एग्जांपल हियर कॉल्ड ए contract to indemnify B against consequences of any proceedings which C may take against B in respect of certain sum of rupees 200. This is a contract of indemnity कि अगर C कोई भी एक्शन B के खिलाफ लेता है तो A उसको पैसा देगा. So that is called indemnity, मतलब उससे लॉस से बचाएगा. This is called contract of indemnity. And then comes contract of guarantee. A contract of guarantee is basically protecting someone from the loss. Okay, so it says a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person. Okay, in the case of his default. So here the game is between three people. Okay, so there is a contract is taking place between B and C.
ठीक है। सी इज लेट्स से बिल्डर, ओके, वो कुछ बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। और बी इज अ बैंक, सी ने बैंक के पास से लोन लिया है, पैसा लिया है टू मेक अ बिल्डिंग, ओके। इन रिटर्न ही विल पे विथ इंटरेस्ट, बट देयर इज अ गारंटी प्रोवाइडेड बाय ए कि इन केस सी पैसा नहीं दे पाया, who will pay money? A will pay money. So there are three parties. Okay, this is a contract of guarantee. The person who gives guarantee is called surety. So this guy is called surety. Person in respect of whose the default, the guarantee is given, is called principal debtor. So he is principal debtor. Okay, ठीक है. And the person to whom guarantee is given is called creditor. Okay, so this guy is called creditor. Surety, debtor, creditor. Okay, so there are three agreements which are taking place. It is for the surety of creditor. इसकी surety के लिए ये contract किया जाता है. For example, you take a loan from a bank and your father gives guarantee for it. Okay, so it is basically a contract of guarantee. Okay, chaliye, great. So these are the few important, you can say, concepts I thought would be very important at this juncture for a lot of you. Okay, now with this, please take 50 question का module from protalentdigital.com. वहां पे नीचे डाउनलोड पीडीएफ बटन है, वहां पे आप क्लिक करिए और ये पीडीएफ फटाफट डाउनलोड कर दीजिए. ओके, सो आपको बड़ा फायदा होगा उसकी वजह से. ये 50 क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए. मैं इसका एक अगला वीडियो बनाऊंगा जहां पे आई विल बी सॉल्विंग few questions out of those 50 questions. Okay, chaliye, great. So with this, I'm closing this module. I hope you are enjoying this Score Booster module from us. Okay, chaliye, great. Thank you very much.